Hello, how are you all? Today it is the second part of the chapter polynomial. In the previous part, we have learned about the basic terms related to the polynomials. And in this part, we will learn about the zeros of the polynomial. So we'll start. According to the definition, let px be a polynomial. It means any expression we can let that is px. So if p alpha equals to 0, then we say that alpha is a zero of the polynomial px or root of the polynomial px, right? It is a little bit confusing with this statement. So with the help of example, we are able to learn easily what is the meaning of the zeros of the polynomial. And before starting the example, I will explain you in the simple word that if in a polynomial, suppose this is x minus 3, this is a polynomial, right? So we have to put the value in place of x, we have to put any numerical value in such a way that when we solve this, the answer should be equals to 0. If it happens, then that value is known as 0 of the polynomial, right? So इसका मतलब अगर x minus 3 हमारा polynomial है तो हमें x की जगह कोई ऐसी वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी जिसे सॉल्व करके, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आंसर 0 आए। और अगर 0 आता है तो वो वैल्यू इस पॉलिनोमियल का 0 माना जाएगा, राइट? सो वी स्टार्ट फ्रॉम हियर px equals to x minus 3. Because we have to put px equals to 0, we have to find the 0. So we'll put px equals to 0. Then we have to assign the value of px, which is x minus 3. तो px की वैल्यू क्या थी? x minus 3. px की जगह हमने x minus 3 लिखा, equals to 0. Right? Now 3 is in minus. When we change its side, it goes in plus. माइनस का 3 इधर जाके प्लस में कन्वर्ट हो गया, and then x equals to 3. Therefore 3 is the 0 of the given polynomial or px, right? So in this way, by using a transpose method, we can find the 0 of the polynomial. The second, we are having another polynomial qx, which is 3x plus 2. So again, because we have to find the 0, so हमने क्या करा? qx को 0 के इक्वल रखा. qx की वैल्यू क्या थी? 3x plus 2. तो qx की जगह हमने 3x plus 2 equals to 0 रखा. Again, we have to use a transpose method. It is plus 2. Change its sides. It will turn up into minus. 3 is in multiply. When we change its side, it goes in divide. So, what is the value of x? Minus 2 upon 3. और वो minus 2 upon 3 is the 0, or we can also say it is the root of the polynomial, because in the definition we can say it is written here 0 of the polynomial or root of the polynomial. So this alpha is this value. जो x की वैल्यू आई है यही हमारा alpha होता है, right? So we will move towards the exercise 2.2, question number 1. In question number 1 we have to find the value of the polynomial. एक polynomial दे रखा है जिसकी हमें value find करनी है different cases में जब x की values अलग अलग होंगी. So in the first case the value of x is 0. So जहाँ जहाँ x आ रहा है हमें उसकी जगह 0 put करना है. So यहाँ पे x है, so it will come p0 equals 5x, 5 into 0 minus 4x square, it means 4 into 0 square plus 3. 5 zeros are 0, 0 square is 0, and again 4 zeros are 0 plus 3. So what thing is left? Only 3. So that will become the value of the polynomial, right? Then in second case, now x is minus 1. It means जहाँ पे भी x है इस polynomial में हमें अब x की जगह क्या पुट करना है? We have to put minus 1. So 5 into minus 1 and minus 4 into minus 1 का square plus 3, right? Solve it. 5 into minus 1, minus 5, and minus 1 square is 1, so 4 ones are, we can write down here, plus 3. Again solve it. Minus 5 minus, we have to copy as it is, 4 ones are 4 plus 3, minus plus 5 plus 4, 9, because bigger number is of minus, so we have to put minus sign.
+3 माइनस प्लस माइनस, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, बड़े नंबर से पहले माइनस साइन है, इट मीन्स इन आंसर वी हैव टू पुट माइनस साइन, राइट. सो दिस इज द वैल्यू. थर्ड पार्ट, x equals to 2, so p2 equals to, again we have to check the polynomial 5x minus 4x square plus 3. अब जहाँ x है वहाँ हमें दोनों जगह 2 पुट अप करना है. सो इट विल 5 into 2 minus 4 into 2 square plus 3. Open the bracket, 5 2 is 10, 2 square is 4 plus 3, 10 minus 16 plus 3, then plus minus 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 6 plus 3 or minus 3, right. Then question number second. In question number 2, we are having the polynomials, and for each polynomials we are having 3 values and we have to solve it. Just like question number 1. Here we are having only one value, right? Now in that question, for each part we are having 3 values. So first part, the polynomial is y square minus 1 plus 1. This is the polynomial. और पहले केस में हमारा y की वैल्यू क्या है, 0. इट मीन्स वेयर एवर y इज देयर, जहाँ जहाँ y है हमें वहाँ पे 0 पुट करना है. सो y स्क्वायर 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 एंड 0 माइनस 0 कुछ भी नहीं है, इट मीन्स ओनली प्लस 1 इज लेफ्ट, सो 1 इज द आंसर. नेक्स्ट वैल्यू इज 1, इट मीन्स नाउ द वैल्यू ऑफ y इज 1. तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 1 पुट अप करना है. सो 1 स्क्वायर माइनस y प्लस 1, वी कैन सी हियर. Now 1 square is 1, minus 1 plus 1. 1 is in, these 1 are in different sign. So plus minus minus, we can cancel that. Plus 1, so 1 is the answer. Now, the third part, now the value of y is 2. फिर से इस 2 को हम जहाँ जहाँ y है वहाँ पे पुट अप कर देंगे. So 2 square minus 2 plus 1. Right? 2 square is 4 minus 2 plus 1. 4 minus 2 is 2 plus 1 or 3. Right? Now, the second part, it is pt equals to 2 plus t plus 2t raised to power 2 minus t raised to power 3. This is the polynomial. फिर से हमारा फर्स्ट क्या है, p 0. इसका मतलब t की वैल्यू 0 है, तो जहाँ पे भी t आएगा वहाँ पे हम 0 पुट अप कर देंगे. 2 plus 0 plus 2 into 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब. 0 के स्क्वायर क्यूब्स कर देंगे तो अगेन वी विल गेट 0 ओनली. सो 2 इज लेफ्ट एंड दैट विल बिकम आवर आंसर. नेक्स्ट वैल्यू, व्हेन नाउ वैल्यू ऑफ t is 1, so wherever t comes you have to put 1. So 2 plus 1 plus 2 into 1 square minus 1 cube, right? So 1 square is 1, 2 ones are 2, 1 cube is 1, so minus 1. So 2 plus 1 3, 3 plus 2 5, minus 1 minus 1, 5 minus 1 is 4, right? Then next value of t is 2. अब जहाँ पे भी t आ रहा है वहाँ पे आपको 2 पुटअप करना है. इसका मतलब 2 plus 2 into 2 square minus 2 cube, you can see here. So 2 plus 2, then 2 square is 4 minus 2 cube is 8. 2 2s are 4, 4 2s are 8. Then 2 plus 2 will remain the same, 2 4s are 8 and minus 8. Again we can cancel them, right? So 2 plus 2 4. Then question number 3, we have to verify, right? In each part 2 values are given or 1 value is given. We have to verify that given value is the 0 of the polynomial or not, right? इसका मतलब क्या हुआ, हमें ये बताना है कि जो हमारी वैल्यूज हैं वो गिवन वैल्यूज हैं वो हमारे गिवन पॉलिनोमियल्स के जीरोज हैं या नहीं हैं, राइट? बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 3, 2-3 parts are left of question number 2, so we can discuss first. So the third part, px equals to x square, right? अब पहली वैल्यू हमारी क्या है, 0. मतलब जहाँ पे भी x आएगा we will put 0, so 0 square which is 0. सेकेंड वैल्यू हमारी 1 है, अब जहाँ x आएगा वहाँ पे हम 1 पुट अप कर देंगे, 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1. थर्ड वैल्यू इज 2, सो इन प्लेस ऑफ x वी हैव टू पुट 2, 2 स्क्वायर इज 4, राइट? देन फोर्थ पार्ट, px equals to x minus 1 into x plus 1. Again we have to put 3 values. Firstly in place of x we have to put 0, so 0 minus 1 into 0 plus 1,
So 0 minus 1 is minus 1 into 0 plus 1 is 1. 1 ones are 1 plus minus minus or minus 1. Right? Then next part, and the value of p is 1 now. Right? So 1 minus 1, it means जहाँ पे भी x है, we have to put 1 there. So 1 minus 1 into 1 plus 1. 1 minus 1 is 0, 1 plus 1 is 2, so 2 zeros are 0. Then when the value of x is 2 now, so 2 minus 1 into 2 plus 1, we can see here, 2 minus 1 is 1 and 2 plus 1 is 3 and 1 3 is a 3. Right? Now the third question in which we have to verify. So you can see in first part, this is the polynomial 3x plus 1 and this is the value of x. Now we have to verify, हमें ये verify करना है कि ये value जो है वो इस polynomial का 0 है या नहीं है. So how we can verify? जैसे हमने definition में discuss करा था कि अगर इस value को x की जगह put up करके and after the solution के बाद answer 0 आएगा, then we can say that the given value is the 0 of the given polynomial. Right? So we have to do the same thing कि इस value को हमें x की जगह put up करना है. So wherever x is there, we will put this value. So p minus 1 upon 3 equals to 3 into minus 1 upon 3 plus 1. Now we can cancel 3 and 3. So minus 1 plus 1 and plus minus minus. So 0. Last में 0 आ गया. It means this value is the 0 of the px. Right? Then second part, px equals to 5x minus pi. Now the value of x is 4 upon 5. Again, we have to repeat the same thing. Wherever x is there, we have to put 4 upon 5. So px, in place of px, we have to write p 4 upon 5 equals to 5 into 4 upon 5 minus pi. Now again, we can cancel 5 and pi. So 4 minus pi, we can cancel it further. Right? It means 4 minus 22 upon 7. Take the LCM. But at last, we are not getting 0. और जब 0 नहीं आएगा, इसका मतलब ये वैल्यू जो है x equals to 4 upon 5 is not a 0 of px or the polynomial. Then third part, x square minus 1. Or now we are having two values, x equals to 1 and minus 1. So एक बार x की जगह 1 पुट अप करना है और एक जगह x की जगह minus 1 पुट अप करना है. So सबसे पहले हमने minus 1 पुट अप करा हुआ है. So minus 1 square minus 1 और 1 minus 1 0. 0 आ गया, it means this value is a 0. सेकेंड में फिर हमने 1 पुट अप कर लिया. सो p1 1 स्क्वायर माइनस 1 1 माइनस 1 अगेन 0 और अगेन वी कैन से 1 इज a 0. सेम थिंग वी हैव टू डू इन फोर्थ पार्ट वेयर द पॉलिनोमियल इज x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2. नाउ अगेन वी आर हैविंग टू वैल्यूज. x की वैल्यू माइनस 1 है और फिर दूसरी वैल्यू 2 है. सो पहले हम जहाँ x है वी हैव टू पुट माइनस 1 देयर. सो p माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 2. Right? Minus plus minus 0 into minus 1 or 0. Last में 0 आ गया. It means this value is the 0. Now in place of x we have to put 2. So 2 plus 1 into 2 minus 2. So on the next page we can see 2 plus 1 into 2 minus 2. Right? Or 2 plus 1 is 3. 2 minus 2 is 0. 3 zeros are 0. Or again 0 comes. It means the given value 2 is the 0 of polynomial px. Then fifth part, px equals to x square. Now the value of x is 0. So 0 square is 0. Answer 0 आया. Again this value is the 0. Then next, polynomial is lx plus m. This is the polynomial lx plus m. And the value of x is minus m upon l. Right? X equals to minus m upon l. तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम दोनों जगह माइनस एम अपॉन एल लिख देंगे. तो p माइनस एम अपॉन एल इक्वल्स टू l इंटू माइनस एम अपॉन एल प्लस एम. हेयर वी कैन कैंसिल अगेन l एंड l. सो माइनस एम प्लस माइनस माइनस एम इज 0. सो फिर से आंसर 0 है. इट मीन्स दिस गिवन वैल्यू माइनस एम अपॉन एल इज द 0 ऑफ द px. नाउ द सेवेंथ पार्ट, px इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1 वेयर द वैल्यू ऑफ x आर माइनस 1 अपॉन रूट 3 एंड 2 अपॉन रूट 3. फिर से वी हैव टू रिपीट द सेम थिंग कि जहाँ पे भी x है फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट माइनस 1 अपॉन रूट 3. राइट? यू कैन सी हियर 3 इंटू माइनस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1. राइट? सो ओपन द ब्रैकेट्स. 3 विल रिमेन द सेम. माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया. रूट 3 का स्क्वायर 3 आ गया. माइनस 1. सो वी कैन कैंसिल 3. So 1 minus 1 which is equals to 0. 0 आया. It means this value
minus 1 upon root 3 is the 0 of the px. Next value is 2 upon root 3. अब जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे हमें 2 upon root 3 यूज करना है. So it will become right. So this part you can do by yourself. कि यहाँ पे जहाँ पे हमने minus 1 upon root 3 put up करा है, you have to put 2 upon root 3. So 2 upon root 3 equals to 3 into 2 upon root 3, right? And when you solve it, so it will come 4 upon root 3. 3 से 3 cancel हो जाएगा. Then 4 minus 1, which is 3. Last में 0 नहीं आएगा. It means this second value is not a 0 of the polynomial. You have to solve this. Then question number 4. We have to find the zeros just like we have done in the example parts before starting the exercise. Here, find the zero. तो हमने क्या करा था कि we use the transpose method, values को interchange करा था, right? Same thing we have to do here in the last part. We are having the expression, we have to find the zeros. So x plus 5, because हमें zero find करना है तो इस px को 0 के assign कर लिया. So px की value x plus 5 equals to 0. Plus का 5 है, and we change its side, goes in minus, so the value of x is minus 5, and then therefore x minus 5 is a 0 of the given polynomial. Then next is x minus 5. So x minus 5 equals to 0. Minus 5, change its side, it will become in plus, so 5 is a 0. Then 2x plus 5, right? So 2x plus 5 equals to 0. Plus 5, when we change the side, it goes in minus. 2 is in multiply. In the next step, it goes in divide. So minus 5 upon 2 is a 0. Right? And fourth part, px equals to 3x minus 2 or px equals to 0. Then in place of px, write down 3x minus 2 equals to 0. Minus का 2 इधर जाके 2 हो गया. 3 multiply में, divide में हो गया, convert. And the value of x is 2 upon 3, or we can say 2 upon 3 is a 0. Then fifth part, px equals to 3x, right? Now 3x equals to 0. 3 is in multiply. When we change this side, it goes in divide. 0 upon 3, which is again equals to 0, right? So it means this value is a 0. So 0 is a 0 of the given polynomial. Then next one is px equals to ax, right? Or again we can say that ax equals to 0. Now a is in multiply. When we change this side, it goes in division. 0 upon a, and when we divide them, again the answer is 0. Therefore again 0 is the 0 of given polynomial. Then next part, px equals to cx plus d. Now cx plus d equals to 0. Plus d, when we change its side, it goes in minus. C is in multiply. When we change side, it goes in divide to minus d upon c. Minus d upon c is a 0. So these are the solutions of exercise 2.2. And in the third part, we will learn about the remainder theorem, which is very, very important. So please don't forget to see the third video or the third part of this chapter, polynomial. Thank you very much.